That's all that we can genuinely hope for. If you're in Bengal, that's what you can reasonably hope for. But yes, Bengal has seen high turnouts. 80% plus people come out and vote in state assembly elections. Okay, 90% plus in the first phase. Almost every single person qualified to vote came out to vote. That is also historic. Let's not undercut that as well. My colleagues are back on the ground, but quickly, Shekhar, there is a pivot point, a turning point, and it's a psychological turning point. Okay, the statisticians and the psephologists can argue it for the sake of history, but that psychological turning point happens because the voters who have to vote for you voted for somebody else in the past. There are no new voters who have suddenly shown up. The political workers on the ground aren't new. You can say some Yuva worker, but that Yuva worker's father or mother used to be a volunteer for a different party. At some point of time, the same people have to switch sides. And it's a psychological point when they think and everybody wants to back a winner. There are loyalists, but the vast majority of people want to back a winner. So now we are looking at that pivot point. Do you think a psychological pivot point has been reached, as Joyita is mentioning, which Mamata Banerjee had managed to achieve? That the leftist people said, it's done. It's either Didi or oblivion. You think that's happened this time again? Fact that, we spoke about this earlier too, the fact that if they look just outside the states, if you look outside Bengal, you have other so many states which have got industrial expansion, employment, job opportunities. There's so much of safety. And why can't Bengal have the same thing? So I think that change is happening as we talk around us because people are coming out and voting. Rishabh, as we are talking, I was taking a flight yesterday evening to Goa. And I noticed that there were so many people who were traveling from the airport to Bengal for the elections. And they were very clear that they want to go out and vote. So you see everybody coming in, migrant workers, people are coming in to vote in Bengal because they want to make a difference. So that change is happening as we see. The change will not happen immediately, but that shift is that tectonic shift is happening as we talk, and that's only purely happening because the internet has made the world a smaller place. Internet has made India a smaller place. They're seeing what's happening in other states. They see, and they also believe that with the kind of intellectual power they have, with the kind of intellectual prowess the Bengalis have, why can't it happen in Bengal itself? Why is it not happening? Why is governance not happening? Why is urbanization not happening? Why are employment opportunities not happening? Why it cannot happen here? And I think it's also important to be competitive. So they're seeing it happening outside, they want to make sure it happens here. And it's also a case of, identity, regional identity, a pride in being what you are as a Bengali. Yeah, but I don't underestimate it. I remember a very senior political figure when I was a young journalist. Because you would, when you are thinking, you're utilitarian and utopian, that it's about the roads and it's about the electricity and it's about the jobs. And that politician told me, how emotional can you get about a new highway? Okay, you can get angry about the potholes, but how emotional do you get? Okay, but you can get emotional about your language, about who you are, where you come from, what you eat. These are emotional points. Don't underestimate the power of emotions in politics. So yes, the people who are coming from outside the state, living and working there, coming back to vote in large numbers, they could be coming out and voting for change, that we're done with this. Okay, enough is enough. Okay, we want Tata's factories in Bengal now. We changed our minds. Or they could be saying, no, we have to go back and defend ourselves, because there is one Achilles heel that remains for the BJP, that this election, when it comes down to a Bengali face for the election, is that sorted? Okay. More breaking developments coming on your screens. The Election Commission, I've just been told, has transferred the Joint Block Development Officer in the South 24 Paragnas district. This is in Falta. This happened just before the polling began about an hour or so ago this morning. This was following protests by the TMC in the constituency over the visit of this Ajay Pal Sharma from UP, that IPS officer from UP. It's also removed 2 additional district magistrates, one of them in charge of the South 24 Paragnas district. They have not cited any reasons for this. This is not unusual. It is perfectly normal for the Election Commission to receive complaints from all political parties, ruling or in opposition,
and transfer officers accordingly, whether they find a wrongdoing or not a wrongdoing. If the political parties think that an officer should be transferred, an election commission is very sympathetic in many cases to accommodate these kind of requests. So don't think of this as ridiculously abnormal. Let's hit the ground where my colleagues Ritesh and Brian are standing by. Brian, I know the polling booth behind you has heavy security because that's where Mamata Banerjee will be shortly voting. But what's happening? What are the crowds telling you? Well, Rishabh, clearly we are at this very booth here, which is also Bhawanipur, and we are joined by some people. We will be talking to them. मैम आपका नाम बता दीजिए. वोट देती हैं आप? पम्पी दास. पम्पी जी, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी. क्या इश्यूज क्या है? नेशनल इश्यूज होंगे, लोकल इश्यूज होंगे, जिसको दिमाग में रख के आपने वोट किया? डेवलपमेंट चाहिए और क्या बोल सकते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. सर, आपने वोट डाल दिया? हाँ, आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल नाम दिया. क्या है आपका? एसआर बनर्जी. सर, आपके दिमाग में क्या इश्यूज होंगे, क्या मुद्दे होंगे, नेशनल होंगे, लोकल होंगे, जिसको दिमाग में रखे? Major issue is any party who goes for industrialization, where my son who are in Bombay and Delhi can come back, that is the issue. You want industries to come, and also is it safe here? कोई डर है? Is there a fear of casting? There is no doubt. Yeah, yeah. Peaceful, yeah, thank you. So, Rishabh, there's some people here. We'll like to talk to them here where we are. Sir, आपने वोट डाल दिया? आपका नाम क्या है? हाँ, देवीलाल साहब. सर, आपसे भी सवाल यही रहेगा, क्या इश्यूज है, क्या मुद्दे हैं जिसको दिमाग में रख के आपने वोट दिया? ना, मुद्दे तो सब ठीक ही है, इसलिए वो हम लोग का गंदा अधिकारी है, इसलिए हम लोग वोट दिए. सर, यू वोटेड, आपने वोट कर दिया? आपका नाम बता दीजिए. संदीप कुमार बनर्जी. संदीप जी, क्या इश्यूज है, क्या मुद्दे हैं? इज इट द नेशनल इश्यूज है, लोकल इश्यूज है, जिसको दिमाग में रख? जो भी है ठीक है. क्या इश्यूज? ये तो अभी तो जैसी चल रहा है ना, सरकार हम लोग को जैसी चल रहा है, सेंटर में बीजेपी है, इधर में टीएमसी है, ये तो चल रहा है, देखिए क्या होता है. पीसफुल है, यहाँ सब शांतिपूर्ण? हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम, बहुत अच्छा, बढ़िया है. All people are very cooperative, including the sitting BLOs are there. BLOs are very cooperating. माने So, vote is concerned, you should give, people should give that 100% effort, so that that result which comes up, it's a totally, what I say, matured effect. It should have a matured effect like that. thank you so much. So, Rishabh, here we'll try to talk to more such people. आप लोग ने वोट दे दिया सर? वोट डाल दिया आप लोगों ने? क्या नाम है आपका? सुनील राय. सुनील जी, क्या मुद्दे हैं जिसको दिमाग में रख के आपने वोट डाला है? नेशनल इश्यूज है, लोकल इश्यूज है, क्या मुद्दे क्या है? सर, मुद्दे तो जो है अपना जो ममता बनर्जी है तो अपना हाईवे करे हम लोग. मुद्दे क्या है, क्या इश्यूज क्या है, समस्या कुछ है यहाँ? विकास ही सब होना चाहिए, काम ही सब होना चाहिए, और क्या है, बस हम लोग को यही चाहिए और तो कुछ नहीं कोई चाहिए. डर का माहौल है यहाँ? नहीं, कोई डर का माहौल नहीं है. आपका नाम बता दीजिए. रामाकांत राय. सर, आपसे भी सवाल सेम ही रहेगा, क्या इश्यूज है, नेशनल इश्यूज है, लोकल इश्यूज है, इन्होंने डेवलपमेंट बताया, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं जो ठीक होना जरूरी है? मुद्दा जो है सही जो बोला वही होना चाहिए सर जी. हाँ हाँ सर. आपका नाम बता दीजिए. मेरा नाम विजय शाह. वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल दिया. क्या क्या दिमाग में क्या था, इश्यूज क्या थे, लोकल इश्यूज थे, नेशनल इश्यूज थे, जिसको दिमाग में रख के आपने वोट डाला है? इशू तो बहुत सारा ही है. क्या है बताइए. अभी क्या बोलेंगे, वो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा. अच्छा, सब शांतिपूर्वक हुआ यहाँ? हाँ, अभी तक तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है वोट में. ठीक है. कोई डर का माहौल ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है. सर, आप वोट डालने जा रहे हो? आपको वोट है? नीरव झा. नीरव जी, व्हाट आर योर इश्यूज इन योर माइंड? क्या दिक्कत, क्या इश्यूज है जिसको दिमाग में रख के आप वोट करने वाले? इज इट गोइंग टू बी द नेशनल इश्यूज? इज इट गोइंग टू बी द लोकल इश्यूज? लोकल इश्यूज क्या है वो लोकल? एंड ऑल, जिसके लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पर हो गया तो अच्छा होगा. यूथ इज आल्सो डिमांडिंग फॉर जॉब्स एट दिस पॉइंट. हाँ हाँ. एंड एवरीथिंग इज शांतिपूर्वक है? इज देयर अ स्केयर कि आप लोग डर रहे हो ये वोट देने से, या ऐसा कुछ है, या सब शांति में टॉलीगंज से आया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, शांत से. ठीक है. सर, आप लोगों ने वोट डाल दिया? डाल तो दिया है. क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पुंडुरी काखपुरो का. अच्छा, क्या इश्यूज क्या है? मालूम नहीं भाई, वो रिजल्ट 4 तारीख मिलेगा. 4 तारीख, ठीक है. सो ऋषभ, we spoke to couple Yeah, of okay, that was people very here, educative, even though, Brian. Thank there you. are not That really helps put perspectives of what people are actually feeling, because we are sitting in these studios and having otherwise academic conversations. Let's go straight across to Panihati. Ritesh, आपके पीछे लंबी लाइनें दिख रही हैं, तादाद में वोटर्स आए हैं, महिला वोटर्स दिख रही हैं. सुबह से जब से हम चर्चा कर रहे हैं,
6:30-7 बजे से आप वहाँ पर हो फील्ड पे और लाइन बरकरार है, दिखाइए हमें क्या चल रहा है और उनके मन में क्या है, क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल सीधे मैं जो वोटर्स हैं उन्हीं के पास चलता हूं और उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार मैं ऋषभ यहां देख रहा हूं कि जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, जो स्थानीय पुलिस है, उसका मूवमेंट हो रहा है और उस मूवमेंट का ये असर है कि लोगों के मन में एक भरोसा है कि वो फ्री एंड फेयर माहौल में, वो सुरक्षित माहौल में वोट करेंगे। तो यहाँ देखिए कि सुबह से ही मैं खड़ा हूँ 6 बजे से और लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ना? नहीं, हाँ, क्या सर मुद्दे क्या है, किस इश्यू पर वोट करने जा रहे हैं? वेदर अच्छा है तो हम चल रहे हैं, क्योंकि देखिए 5 साल पर मुद्दे बदल जाते हैं। कई बार जो है नेशनल मुद्दे भी कारण बनते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो क्या कुछ सोच कर आप आए हैं यहाँ वोट करने? नहीं वो जो ठीक आए तो ठीक है। अच्छा, आप दादा आए हैं वोट करने, क्या है मुद्दा आपका? ठीक है। कहा जाता था कि यहाँ वोट करने में लोग डरते हैं, नहीं निकल पाते हैं। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप अपने आप? सुरक्षित है। सही। आप पहली बार वोट करने आए हो, क्या है? चलो पहली बार वोट करने आए हो तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपका होगा, बहुत सारी चीजें मन में चल रही होंगी। क्या सोचकर आप वोट करने आए हो यहाँ पर? जो मैं वोट करना आया हूँ, जिसको जो मुझे चाहिए, मेरा स्टेट का डेवलपमेंट चाहिए। वहाँ पे बहुत अभी नौकरी की बहुत ही समस्या हो रही है, तो इसी के लिए नौकरी चाहिए यूथ को। आप दादा, आप बताइए आप किस आधार पर वोट करेंगे? पहले नाम अपना बताइए। डी कुंडू। आप बताइए क्या है इश्यूज, क्या है यहाँ के यूथ के, यहाँ के जो लोग हैं? क्या बताएं, मतलब आई वुड वोट सो दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन गेट्स इंक्रीज्ड, नो, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कंपनियां आए यहाँ पे, मतलब कोलकाता एंड द सबर्ब्स एरिया एंड ऑल, so that people don't get to move out of their state and they get their job and they can come from their home and do their job. इंडस्ट्री चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। आप भी यूथ हो, क्या मुद्दे हैं? और एक और चीज मैंने सुना कि लोग डरते थे चुनाव में निकलने से पहले, तो क्या वो डर अभी भी है या समाप्त हो चुका? अभी तो देखिए आर्मी डिप्लॉय किया गया है, तो एक तरीके से लोग सिक्योर फील करते हैं, तो अभी के लिए बेटर है। तो लाइक डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसा भैया ने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ता है जॉब्स के लिए, तो हमें इधर वही सारी चीज़ें चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो होना चाहिए। आप बताओ क्या है इस? हाँ, क्या इश्यूज क्या है? ये मालूम नहीं, हिंदी। कोई बात नहीं, आप बताएं दादा, क्या आधार है, किस आधार पर आप वोट करने आए हैं? आप तो कितनी बार वोट करने आए होंगे? तो कितनी दफे वोट करने आए होंगे? क्या है आधार, क्या है वोट करने का? बचाव है, भालोई হবে। चलिए कोई बात नहीं, आप हंसिए नहीं, यूथ की बात है ना, तो यूथ को थोड़ा सीरियस रहना चाहिए। क्या मुद्दे हैं? हिंदी नहीं समझते। समझ तो पाते ही होंगे। चलिए आप दादा हिंदी समझ रहे होंगे, अगर थोड़ा सा आप बता दें। चलिए आप बंगाली में ही हिंदी बात नहीं समझते। कोई बात नहीं, चलिए। तो ये बंगाल की जनता है ऋषभ। मैं कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आधी आबादी भी यहाँ पहुंची हुई है और वोट करने यहाँ पर आप मैम आई हैं। क्या कुछ इश्यूज हैं, क्या है मुद्दा, महिलाओं के मुद्दे क्या है? I think there are a lot of issues, and I think any government which comes into the picture, they are going to work on it. So hoping for the best, and let's see what happens. ये भी कहा जाता है कि महिला सुरक्षा को लेकर कंसर्न है यहाँ पर, वोट देने में लोग पहले डरते थे आने से। क्या ये सारी चीजें सही हैं? आज को आप जैसे देख रहे हो, there are a lot of people who are coming here, and they are trying to vote and go back. So I think that's great, and ये मेरा पहला बार है कि मैं वोट दे रही हूँ, because I stay in Bangalore, so वहाँ से मैं आई हूँ। So let's see. बैंगलोर से अगर तुलना करें कोलकाता की, वेस्ट बंगाल की, क्या करें? I think culturally West Bengal is very rich. मैं दोनों जगह रही हूँ, तो डेवलपमेंट के आधार पे यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, एंड वहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ हो सकता है। आप मैम बताएं, क्या आधार है, किस आधार पर? आप इतना अच्छा मुस्कुराती हैं, आप बताइए। उसका मम्मी हूँ हम। तो कुछ तो बता दीजिए, महिलाओं की क्या बातें हैं, क्या मुद्दे? वोट देने आया हूँ, अधिकार है वोट देने का, आ गया। आप मैम बताएं क्या है?
I want to speak in Bengali. आप आराम से बोल सकती है, कोई दिक्कत ভোট তো আমরা দিচ্ছি সকলের উন্নতির জন্য, তো আমরা ভোট দিয়ে যাকেই আনবো আশা করব তার প্রতি আমাদের একটা আবেদন থাকবে যাতে সকলের উন্নতি হয়, আমরা যাতে সাধারণ মানুষ ভালোভাবে থাকতে পারি, আশা করব সেই দিকটা তারা নজর দেবেন। विमेन की जो सुरक्षा है, ये सारी चीजें कंसर्न है। নারী সুরক্ষা রয়েছে, বেসিক্যালি শিক্ষাটা যেটা, এটার দিকে নজর দিতে হবে। সরকারি স্কুলগুলো যাতে ভালোভাবে ডেভেলপ হয়, সে জায়গায় যাতে আমরা সবাই আমাদের ছেলে মেয়েদের পড়াতে পারি, সব দিকটাই। আমরা তো তার জন্যই নির্বাচিত করছি তাদেরকে, যাদেরকে আমরা নির্বাচিত করছি তাদের প্রতি আমাদের আশা রয়েছে, নিশ্চয়ই আমাদের सब दिकटा तारा देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि लोग जो हैं वो खुलकर बोल रहे हैं और खुलकर वोट भी करने पहुंचे हुए हैं। आप मैम थोड़ा सा आप आ जाइए, इधर घूम जाइए, कोई नहीं जाएगा बीच में आपके, आप इधर आ जाइए। इधर क्या है, मुद्दे क्या है आपके? अच्छा आप बताओ भाई, क्या मुद्दे हैं आपके? अरे आप यूथ हो मेरे भाई, बोलना चाहिए। चलिए आप दादा बताओ। Okay, all right, Ritesh, I think we've got a flavor, and which is what this is. This is a dipstick test. It's anecdotal. It's helping us understand from these theoretical academic conversations from homes and studios very far away on what people are actually thinking. So if you were being told that the Bengalis are afraid, they don't want to talk, well, you just heard it. Many of them are happy to talk. Every time you go to a line of people, some of them are going to be shy, okay, camera shy. That's perfectly legitimate, okay. If somebody walks to you and somebody puts a camera in your face, would you start talking? You know, not necessarily. So that's we have to understand. You're all human beings. I'm used to cameras. Other people are used to cameras. There are people who don't feel comfortable. That's perfectly fine. Many people happy to talk. Who you're voting for is your personal decision. You don't have to tell anybody. You don't have to tell Ritesh, Brian, me, anybody you meet, not a pollster. You have no compulsion to tell anybody who you voted for. It's great to have a conversation on why you're voting. All right? And that's what you've seen happen over there, on why people are coming out and vote. But the big takeaway from where Ritesh is standing in Panihati, and we've been tracking this hour on hour, as you can see, Mahua Moitra, there on your screens, who's cast a vote a short while ago, assuming, of course, that for the TMC, that there are long lines of people who are coming out and voting in the early hours of this second phase. There are long lines of women and there are young people. So if you are the BJP and you're thinking that's what you wanted, that's your core audience, women and young voters, you can see in those queues women, young voters who are lined up there. Let's open up this conversation. Priya Sehgal joining us this morning. Raj Lakshmi Joshi is with us as well. Let's quickly open up this conversation to figure this out, as Himanshu Bhatt, I'm told, is joining us also. Priya, here we have it, okay? Now, we can sort of dissect this, but I just want to get a flavor from you. It seems, here we are, 8:30, okay? Long lines. I can see a lot of women coming out to vote. I can see a lot of young people coming out to vote, okay? Does that necessarily mean that if you're the BJP, you're feeling great? Yes, this looks good. Rishabh, I don't know whether BJP should really be feeling great, because the women voters have traditionally also, Mamta has a hold over the women voters. She has delivered versus the BJP, which has just, promised a women's reservation and not yet delivered on it. So that vote could go either way, and I would tend to think that this could be Mamta's vote. In terms of youth, yes. In terms of people who talk development, now that's a language, code word for saying that they want center to come and intervene. I heard some voters say that they want their children to come back to the state of West Bengal. Clearly, that again could be a vote for the BJP. But by and large, okay, on law and order, as you yourself pointed out, that's not something anybody's going to come and say, "Ke hame dar lag raha hai." If there is an atmosphere of fear, it goes to order that they will not speak about it if they are scared. But by and large, what the people were saying, and in terms of, I found by and large, if you look at the coded words, it seems to be a lot of them are not
angry with Mamta. You know, I don't know where they're voting, but there was no anger. A lot of them was chalta hai, what is happening is good, we are fine. There doesn't seem to be anybody, you know, that angry voices you get on the ground saying we've had enough and we want that vote for change that one is hearing a lot about in Delhi by a lot of narrative building also is going on. I didn't see that from the voters' point of view. They seem pretty like we are okay with what it is. Yes, we want development. Who's going to say I don't want development at the end of the day? But apart from that, jo ho raha hai kind of a thing. So okay, so Priya, let's put this into perspective. Okay, a lot long ago, exactly 2 years ago, in fact, where the election was about the national issues, where it was about returning people to parliament and not necessarily to writers' building. Mamta Banerjee pulled off 29 out of 42. She is one of the largest political parties in the Lok Sabha. I think after the Congress and Akhilesh and the DMK, it's her. So that was not a long time ago. In this context, okay, is Mamta Banerjee, can we just write her off and say that her time is done? No, you cannot write her off as yet. The fact that even, you know, for instance, in Assam, you know that by and large, Hemanta is retaining his ground. You know, you see where the trend is going. West Bengal, she is still giving a tough time. And I would say that she has a very strong chance of retaining. That would be like another 5 years if she wins. Then she has also national ambitions. In fact, a lot of the agony in the BJP camp, I'm told, was sparked off by the fact that Mamta saying, you know, at some interaction that next stop Delhi. So, you know, they know that unlike Rahul Gandhi, she is going to be a very formidable face of the India alliance, of the India bloc. So, in that sense, Mamta Banerjee cannot be written off. Even if she loses Rishabh, she is not going to sit quietly. She has age on her side. She has the future. TMC will not be decimated. So, she will be a very formidable leader of opposition in the state if she loses. As of now, I don't see her losing. I'm not really buying into the narrative that BJP is getting 110 plus. But let's see how it works out. She's not undefeatable. The person who's taking her on in Bhawanipur is none other than Subhendu Adhikari. Subhendu Adhikari, after Mamta Banerjee, was face number 2 of the anti-Nandigram protests. He defeated her in Nandigram. So it is possible. Yeah. It is possible. But does that necessarily mean that it is a fundamental tectonic shift that is happening? Bengal has a history in our living memory of voting for one political party for a long time. They did that for the CPM, like it or not. They've done it for Mamta, like it or not. Breaking developments coming in. This is TMC MP Mahua Moitra speaking shortly.